Hello friends, you're watching to Finance Education, and in this video we are going to discuss some important questions of chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe from History. These questions are basically source-based questions, and you know that these kind of questions definitely come in board exams. So let's start and discuss these questions. Hey friends, so we're going to discuss the first paragraph that has been taken from your history textbook, chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. So let's begin. Read the sources given below and answer the questions that follows. तो हम इस सोर्स को पहले पढ़ेंगे और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और उसको हम अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे. So let's read the source A. The French Revolution and the idea of nation within the wide swath of territory that came under his control. Napoleon set about introducing many of reforms that he had already introduced in France. Okay. Though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code has exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, Switzerland, Italy, and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns too, guild restrictions were removed. So overall, what we can conclude from the whole paragraph is that what is Civil Code of 1804? This is what we have learned in this paragraph. The Civil Code of 1804 is also called as Napoleonic Code. In this code, basically Napoleon Bonaparte has brought number of changes in France and the area that has been captured by him under his rule, right? तो वो एक कोड लेकर आए थे और उस कोड का नाम उन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804 रखा था, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं. इस कोड के अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे फ्रांस में और ऐसे और भी रीजन जो कि उनके टाइम पीरियड में जीते गए थे उनके द्वारा, और बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया था, उसे ख़त्म किया था, और पीजेंट्स को भी सर्वडम से जो है फ्री कर दिया था, ना ही सिर्फ सर्वडम से पर मैनेरल ड्यूज से भी, और गिल्ड के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई थी वो भी हटा दी गई थी. अब जो है वो कानून के सामने लोग जो थे वो इक्वल थे और राइट टू प्रॉपर्टी का हक जो है अब सभी को दिया गया था. पहले जैसे कि टाइटल्स जो है दिए जाते थे सर और मैडम, अब किसी के लिए वो स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं थे. जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 states, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. सो फर्स्ट 2 states were given special privileges by birth. They are not supposed to give any kind of taxes, right? तो इस तरह के जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो अब खत्म कर दिए गए थे बाय बर्थ. ओके, सो ये तो था हमारा पैराग्राफ. अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. Okay, then so here are the questions which are based on the paragraph that we have read earlier. So question number A, what was the Napoleon Code? Napoleon Code क्या है हमें ये बताना है. And the question B is write any 2 changes brought by Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ने वो कौन से 2 changes लाए थे जब वो रूल में आए थे. So let's discuss the answers now. ओके, तो हम देखते हैं आंसर ए और बी क्या है. Okay, the Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secure right to property. This code was exported to the regions under French control.
तो द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, ये वो सारे प्रिविलेजेस जो कि बाय वर्ड दिए जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही पैराग्राफ के ड्यूरेशन में मैंने ये रीड किया था, राइट, आपको बताया था। एंड स्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी कर दिया, सभी के लिए कानून बराबर है। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, हर किसी को अब राइट टू प्रॉपर्टी का हक है, राइट। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो ये कोड जो है, ये जो लॉज है, ये सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं थे, ये वो हर एरिया में पहुंचे जहां पे भी नेपोलियन का रूल अब था। तो यही था नेपोलियन कोड, राइट। और क्वेश्चन भी, राइट एनी टू चेंजेस वर्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आ ही रहा है, लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया है हमें कोई 2 चेंजेस बताने हैं, तो हम देख लेते हैं कि उसके आंसर्स भी क्या है। So here are the answers. क्या है answers? 2 changes brought by Napoleon Bonaparte are Napoleon simplified administrative divisions. अब उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिविजन्स बने थे उसे और सिंप्लीफाइड किया, एंड abolished the feudal system. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में से फटाफट से लिखें। Now let's move to the source B. वो सोर्स बी भी बिल्कुल सोर्स ए की तरह ही है, जो कि इसी लेसन के पैराग्राफ से लिए गए। Now let's read source B. Read the source given below and answer the questions that follows. Italy unification during the 1830s, Giuseppe Mazzini sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. So what we can conclude from the source B is that Giuseppe Mazzini is a revolutionary of Italy, and he had played a very important role in the unification of Italy. He has also formed a secret society named Young Italy to complete his goal. But unfortunately, he could not be succeed to complete his goal. वो अपने जब मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, सो उनका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये उठाई किंग विक्टर इमानुएल सेकंड ने, और उन्होंने वॉर के थ्रू इटलियन स्टेट्स को जो यूनिफाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा माना जाता है कि इटली का यूनिफिकेशन जो था ये एक पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस भी अच्छा बनेगा। Now let's read the questions that are based on this paragraph. So here are the questions which are based on source B. So question number A, what was the name of the secret society formed by Giuseppe Mazzini? उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम बताना है जो कि जिसेपी मेज़िनी ने बनाया था, ये हमने डिस्कस किया था। एंड क्वेश्चन नंबर बी, विच रूलर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर? उस रूलर का नाम बताना है जिसने कि इटली को यूनिफाई किया था थ्रू वॉर, ये भी हमने डिस्कस किया है। सो नाउ लेट्स चेक द आंसर। सो दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो यंग इटली होगा। यंग इटली ही है जो जिसेपी मेज़िनी ने फॉर्म किया था। इसके अलावा कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है जो उन्होंने फॉर्म की थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए। एंड कौन से रूलर है जिसने कि इटली को यूनिफाई करने का काम किया था, तो उनका नाम है किंग विक्टर इमानुएल सेकंड। किंग विक्टर इमानुएल सेकंड कहाँ के किंग है, ये भी जल्दी से जाके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ लेट्स रीड सोर्स सी. Read the source given below and answer the questions that follows. Visualizing the nation, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a nation as if it is a person. Nations were then portrayed as female figures.
The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation as a concrete form. That is, the nation figure became an allegory of the nation. So, what we can conclude from this whole paragraph is that uh, while representing a ruler, we can do it through a portrait or a statue. But the question is, how can we give face to a nation? So it was done by 18th century, 19th century artists who basically personified a nation, and they what did they? They portrayed it as a female figure, a female figure which does not exist in a real life. Rather, it sought to give the abstract idea of a nation as a concrete form. वो एक ऐसी महिला थी जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो बनाई गई थी आर्टिस्ट के द्वारा, उन्होंने बनाई थी, और हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का सिंबल थी जो कि नेशन को प्रेजेंट करती थी। तो नेशन की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसे एक चेहरा दिया जाए, और वो चेहरा एक महिला के तौर पे यूज़ किया गया। अब इसी पैराग्राफ के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So here is the question, what is an allegory? Allegory जो कि हमने पैराग्राफ में भी रीड किया है, ये allegory होता क्या है? तो इसका आंसर्स हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। The female form that was chosen to personify nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of a nation a concrete form, that is, the female figure became an allegory of the nation. So, नेशन को पोर्ट्रेट करने के लिए हमने उसे पर्सोनिफाई किया, हमने उसे एक फीमेल फॉर्म दिया, एक ऐसी फीमेल जो कि रियल लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक चेहरा दिया गया नेशन का, और हम कह सकते हैं कि एलिगरी बेसिकली एक फीमेल फिगर है जिसके थ्रू हमने, इस सिंबल के थ्रू हमने जो है नेशन को पोर्ट्रेट किया है। तो एलिगरी कुछ भी नहीं, एक फीमेल फिगर सिंबल है जो कि हमने नेशन के लिए दिया है। Thanks for watching our video. If you like our video, then hit our like icon, share it with your friends, and if you have not subscribed it yet, then subscribe it for further notifications. See you then next time.